Good evening, guys. How are you? This is Dr. Zishan, and I hope everything is fine at your place. I don't have any mean word or planned suggestion or anything. I plan any sentence or words in order to convey a message. It's all a friendship talk, and it's just a matter of life. We are going through. We are spending our lives. In each and every individual is going through their life. Somebody is a doctor, somebody is engineer, somebody is pilot and chartered accountant. There are so many qualifications. So many people are going through them. Say, for I'm a dentist. I work for a dental profession, and I completed my MBA as well, so that I can manage my profession in a better way. But I just want to discuss a few things about regarding my profession. It may be interesting for some, and maybe not for so many. I don't mind, but everyone in this world, they have to go to the dentist now or then. Everyone. It's a universal truth, because teeth are the most important thing in the whole body. Very important thing. Of course, heart, kidney, liver, lungs, brain, every organ of the body, they are performing individual function in the body. That creates a complete human being. But in order to eat anything or drink, even although, are you going to eat something yummy good or a medicine, you have to use your mouth, your tongue. You have to speak with your mouth. You have to face the community. You have to face your secondary factors, your environment. You have to talk to your parents, your wife, your son, everybody, your friends. You have to face your profession, your colleagues, everything you have to face with your mouth and your teeth. Of course, teeth are very important. This is the reason why the medical health science distribute the profession between a general physician and a dentist. There are so many myths and so many conclusion and confusion between the people. I don't know why don't they understand that what the dentist is and why is being allotted an individual degree, individual certification to perform his job. I don't know why don't they understand. I just want to make this thing clear, and this is very, very important, especially for our country. We are living in Pakistan, and we have to, and the daily basis I bear, and I face so many things, so many confusions for my profession. This is not the query, or this is not a call for the customers to attract towards my profession. I am talking to each and every individual from top to bottom in every profession. But I want to make one thing clear, and that I'm talking on behalf of the whole dentistry. Why there are so many misconceptions? I don't want this dentistry to be associated only for those who afford the expensive treatment. I just want to come to the point. I just want to come to the specific point. I don't want this dentistry to be associated only for those who can afford this, or the upper level, not the middle level, or of course not the lower level, who can't afford. It's not the matter, it shouldn't be the matter of affordability, because everyone have their own mouth and their right to maintain their oral hygiene and to maintain their teeth, so that they can eat well, simply in order to improve the quality of life. And while improving the quality of life, you have to eat well. Man is a social animal. We have to face the people, we have to face everyone, we have to face everything in order to identify that we are human.
we have so many likes and dislikes, chicken, beef, ice cream, cold drink, chocolate, blah 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 blah, and so. But you know, we have to face each and every individual. So I just want to talk about a specific topic, and that is called dentistry, or if a dentist is a rich man. No. Either, is a dentist a rich man? Yeah. In fact, there is no any sort of possibility that if dentist is a rich man. I just want to clarify one thing. If this word is only associated with a dentist or dental surgeon, why? And I don't think so. And how is it possible? I just want to clarify this thing. First of all, let's start with the dentistry. What is dentistry? The most important profession. I don't want to associate this profession, I told you, only for those who can afford this. Not at all. Let's talk about a cup of tea. Say I'm having a cup of coffee, cup of tea. I need it. It's my need. This is my need because maybe I love it, maybe I like it, or maybe I'm hungry. I want to cut up my hunger, or anything like that. Or say I have this mobile phone, I can use this pen because it's my need. And why? It is associated because I am a dentist. I want to perform my procedures physically. I cannot provide you any sort of medicine. I cannot provide you any sort of medicine. The pharmaceutical associated with the dentistry is not that far included for the dental treatment. I cannot cure a dental cavity with the medicine. I cannot cure a dental abscess. I can reduce the dental infection, but I cannot go for complete curing the dental infection with any sort of medicine. Or I need to I can reduce the pain, but I cannot completely cut off the pain with with using the medicine. I have to use. I cannot clean. I cannot provide you any sort of medicine so that you can clean your mouth. You can remove plaque, calculus, tartar, so many things in the mouth, or bad breath. Except for you can reduce these things till some extent with using the medicine, good toothbrushing, maswak, and so many things. I just want to come back to my point that dental doctor तो होते ही पैसे वाला है. मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, and I just conclude this message, and I want to convey each and every insight of my profession and the way I think in my native language, so that each and everybody can understand. We belong to Pakistan. We have a perfect language, Urdu, that anybody can understand. It's better कि मैं समझाऊँ कि उर्दू में कि कोई भी बात है किसी को भी इफ़ यू टॉक अबाउट द डेंटिस्ट्री, दांतों के डॉक्टर बहुत अमीर होते हैं. मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, दे कॉल मी, यार तू तो नोट छापता है बैठकर, अरे तेरी इनकम तो बहुत है, अरे आपकी इनकम तो बहुत होगी, और डेंटिस्ट तो बड़े पैसे वाले होते हैं. उनसे ट्रीटमेंट की बात करो. सारी बात करने के बाद कस्टमर मुझसे पूछता है इसका ख़र्चा कितना आ जाएगा, और अपनी बड़ाई भी मारते हैं.
खर्चे की कोई बात नहीं है, महंगा करो, अच्छा करो, सब कुछ करो, पर खर्चा कितना आ जाएगा? वाई आई डोंट नो वाई दे टॉक टू मी लाइक दैट। इट्स अ प्रोफेशन लाइक एवरीबडी, every other person use their profession in the same way. The dentistry is a profession, it's a professional field, very specified professional field. This is associated with your tooth, with your mouth, with a disease, with the infections, with the pain associated in your mouth, so that you cannot bear these pain, and they turn very difficult for you, and they totally destroy your quality of life. And you have to be very cautious about your mouth, especially if we talk about those people who are working at the high level, bankers, army officers, chartered accountants, or doctors, or anybody that's associated with the social life, in a perfect social life. If you are talking to your son, even your son can say that, your father, your teeth are too dirty, please get them treated as soon as possible, I don't like them. So ज़रूरी है कि अपने दांतों का ख्याल रखें। लेकिन अगर ये कहा जाए कि दांतों के डॉक्टर तो अमीर होता है, तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। लेट्स स्टार्ट अ लाइफ। एक डॉक्टर की शादी होती है और शादी करते हैं, आपका बेटा क्या करता है जी? हमारा बेटा डेंटिस्ट है, ही इज़ BDS, क्वालिफाइड BDS। मज़े की बात, डिस्टिंक्शन होल्डर भी है। इसमें सब्जेक्ट होते हैं एनाटमी, फिजियोलॉजी, फार्मा। एक डॉक्टर की डिस्टिंक्शन आई फिजियोलॉजी के अंदर, बहुत बड़ी बात है। फिर एक उसकी बायोकेमिस्ट्री के अंदर एक डिस्टिंक्शन आई, बहुत बड़ी बात है, डिस्टिंक्शन होल्डर है। उसके बावजूद भी वो डॉक्टर है, उसकी शादी हो गई, बड़ी प्यारी लड़की मिल गई जी। लड़की वालों को बताया जी हम जॉब करने गए थे, लेकिन जॉब करने में हमें ज़्यादा पैसे नहीं दे रहे, काम हमसे लाखों का कराते हैं और हमें सैलरी देते हैं 40-50 हज़ार रुपये। हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर? हम तो एक ट्रांसपोर्टेशन भी अफोर्ड नहीं कर सकते। सो ट्रांसपोर्टेशन भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर हम ऐसा करते हैं, नो, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई एम एन इंडिविजुअल, आई कैन स्टार्ट माई ओन बिजनेस, आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड, आई डोंट नीड एनी वन बिकॉज आई एम अ बॉस माई सेल्फ। मैं खुद ही बॉस हूँ अपना। जाओ, अगर मैं किसी के सीनियर से काम करता रहा ज़िंदगी भर, तो फिर मुझे वो ज़िंदगी भर जो है ना, मैं अपना कभी काम नहीं कर सकता, मैं रूट कैनाल नहीं कर सकता। कैन आई हैव सम टी? सो अगर मैं अगर शुरू में जॉब करने के लिए गए, तो वहाँ कहने लगे आपका एक्सपीरियंस है? सीखने दोगे, सिखाओगे तो एक्सपीरियंस होगा ना, वरना आपका एक्सपीरियंस कहाँ से हो सकता है? सो हमने उनको समझाया। सो व्हाट दे वांट आर डेंटिस्ट, दे नीड एक्सपीरियंस, और दे वांट मी टू stand with someone for a time. No, why not? When I was a doctor and I was working with a senior consultant, and he was working since last 30 years, and I asked him, what about root canal? He said, Dr. Saab, don't go for root canal, especially for the posteriors, यानी कि पीछे के दांतों की रूट कैनाल पे मत जाना, आगे के दांतों पे रूट कैनाल करना। I said, why? Because you can't handle. It's too difficult. Oh no. Oh, I'm a boss myself. Sorry, Dr. Sohail. I will never listen to you. I'll perform everything myself. And first thing first, मेरी first पहली root canal, मैंने अपने कस्टमर को बताया था कि मैं रूट कैनाल कर रहा हूँ पहली बार। And she said, no problem, doctor. You are an educated person. I know you'll do it well. And really, I did it well, very well, even without taking any X-ray. I just threw my X-ray equipment away, and I just rely on the OPG, जो बड़ा वाला X-ray होता है। हाथ सेट हुआ नहीं हुआ, वो करने वाला कौन है? शिफा तो हमारा रब देता है, उसने शिफा देनी है तो देगा, हमारी नीयत साफ़ है। लेकिन डेंटिस्ट तो बड़े अमीर होते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? एक डेंटिस्ट, if we talk about a simple root canal, if we talk about a simple RCT,
we have to stand for our city at least for 3 to 4 hours for a single patient, and that will cover obviously for 3 to 4 or 5 6 days. And after that we have to put a perfect crown. Let's talk about the crown later. We talk about the root canal. If I charge, if a doctor is charging say 3,000 or 4,000 rupees for a root canal, does it make difference? आप जाकर किसी भी फिजिशियन को 2,500 से 3,000 3,500 रुपए फीस देते हैं और वो अंदर आपका सारी बातें सुनता है, कंप्यूटर में डालता है और आपको कहता है ये खा लेना और 25 तारीख को आ जाना. Why do you pay him 3,500 rupees just to tell him your story? Are you telling your story to a psychiatrist? No. But you are going to tell him the whole story that you are suffering through. आपको कोई प्रॉब्लम है, if you are suffering from diabetes, you are suffering from heart problem, you have to tell your doctor. In the same way, आपको डेंटिस्ट को जाके बताना है, I have pain in my ears, in my tongue, in my tooth. Do something. And this is the duty of the doctor, of a dentist, to provide you a chair-side painless treatment. मीन्स आपको डेंटिस्ट की ज़िम्मेदारी है कि आपको चेयर पर, यानी कि जब आप दांतों की चेयर पे आके बैठें तो उस पे आपको ऐसा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें जिससे आपका पेन भी ना हो और आपका पेन ख़त्म भी हो जाए. अब आप बताइए, कैन यू आइडेंटिफाई दिस थिंग, और कैन एनीबडी डू दिस इन अ बेटर वे or in such a comfortable way that somebody is in pain and he came to you and he asked, please, I want to get rid of this pain, and the doctor helped you. He treated you in such a beautiful manner. I call this an artistic way of dentistry, and he provide you a dental treatment, and he don't give you pain, and he reduces the pain, and he made you pain free. So is this a good treatment or not? And why you call dentist a rich person? क्या उसके पास एक्सपेंसेस नहीं होते? क्या उसके पास एक्सपेंसेस नहीं होते? एक दूसरा क्वेश्चन, कोई भी पेशेंट आता है, यार डॉक्टर साहब वो इंस्ट्रूमेंट तो ठीक है ना आपके? क्वेश्चन मार्क. ऑफ कोर्स ठीक है भाई, ऑफ कोर्स ठीक है, लेकिन व्हाई नॉट इंस्ट्रूमेंट? ऑफ कोर्स दे आर राइट, इट्स राइट. दे नीड टू आस्क मी कि डॉक्टर साहब इंस्ट्रूमेंट ठीक है, लेकिन क्या आपने आज से पहले अपने फिजिशियन के पास जाने से पहले जब वो ज़बान आपकी हटाता है तो आपके उस टूल को देखा था? वो वुडन था, डिस्पोजेबल था या मेटल का था? क्या आपने अपने कान साफ़ कराए थे तो देखा था? क्या आपका ऑपरेशन हुआ था और आप जनरल एनेस्थीसिया में पड़े हुए थे तो क्या आपने अपने उनके टूल्स को देखा था? क्या उनके टूल्स में बैक्टीरिया नहीं आते, या वो आपके लिए नए टूल इस्तेमाल करते हैं? जस्ट लेट मी नो. Is it true? Why you ask only dentist? Because they are putting something in your mouth. आपके मुंह के अंदर इंस्ट्रूमेंट डाल रहे हैं इसलिए? No, that's wrong. मुंह में तो एक थर्मामीटर भी डाल रहा है फिजिशियन, एक ज़बान का टंग रिट्रैक्टर भी डाल रहा है, एक नेज़ल समथिंग भी डाल रहा है, एक ईयर को चेक करने के लिए भी टूल डाल रहा है. उसको नहीं देख रहे आप? और अगर आपका बाईपास हो रहा है, आपका कोई और सर्जरी हो रही है, आपका एक कांटा छुप गया है, तो आपका जो टूल लगा रहा है, जिस ब्लेड से काट रहा है, क्या आपको मालूम है कि इस ब्लेड के इंस्ट्रूमेंट साफ़ था या नहीं था, या नया था या नहीं था? यू डोंट नो. व्हाई डोंट यू आस्क एवरीबडी? इट्स योर राइट. आप पूछ सकते हैं, ज़रूर पूछें. से फॉर माई सेल्फ, आई यूज डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट. At least 75 to 80% I use disposable instrument. There's no chance. I don't need any sort of sterilization. I use them. I use the individual person, and definitely मैं उससे चार्ज कर रहा हूँ, उससे शायद 2 गुना ज़्यादा चार्ज कर रहा हूँ. So if I am expensive, then let me know how. तो फिर तो मुझे एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए. I don't need to use. I need to use single instrument. एक कस्टमर मेरे पास आके बैठता है, एक डेंटिस्ट के पास आके बैठता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल माई सेल्फ, बट आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ. कि somebody, any customer, any dental, any person who needs me, he'd come to me and he sit with the dental chair, and we started the treatment. अगर मैं उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ, I have to put on my gloves. I have to use the gloves. I have to take out my examination kit. I have to use my surgical grinder. I have to cut something in the mouth, or I have to use some H files, K files for root canal, or I have to use a filling material, or especially I have to use the cotton. What if the cotton is placed beside my foot on the floor? Can I use it?
क्या मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ ज़मीन से उठा के? नो। आई हैव कॉटन बॉल्स, कॉटन पैलेट, दे आर प्री फैब्रिकेटेड कॉटन, जो डेंटिस्ट्री के लिए यूज़ की जाती हैं। इसका एक 3 ट्रिपल सिरिंज कहलाता है, जो मुंह में पानी डालता है, एयर डालता है। वाई नॉट, उसके वो भी डिस्पोजेबल आता है, वो भी लगा हुआ होता है, मेरे पास लगा है। तो जब ये चीज़ों की कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है और मैं अगर आपसे ये कॉस्ट चार्ज कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ अपने ट्रीटमेंट प्लान के अंदर, तो क्या मैं महंगा हूँ? क्या मेरी एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं? आपका मोबाइल फ़ोन, किसी इंडिविजुअल का मोबाइल फ़ोन टूट जाता है तो फ़ौरन जाके दूसरा मोबाइल ख़रीद लेता है। क्या वो इंतज़ार करता है? नुकसान उठा लेता है? या फिर कहता है यार हो गया, मैं इससे ही बेहतर लेता हूँ? ऐसा ही होता है ना। वाई नॉट टू द डेंटिस्ट? क्यों? डेंटिस्ट को क्यों समझते हो अमीर? डेंटिस्ट अमीर नहीं होता। से शादी होती है, एक लड़की आती है, डेंटिस्ट से शादी हो रही है, उसके मैं बचपन से हमारे जहन के अंदर डलाया जाता है बेटा तुम्हें डॉक्टर बनना है। फिर उस डॉक्टर की लाइफ शुरू होना शुरू हो जाती है। वो समझता है मैं डॉक्टर बन चुका हूँ, वो डॉक्टर बन चुका होता है, वो डॉक्टर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है। बनते 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 वो डॉक्टर ही बनना, उसका किसी से मुलाकात हुई। ही सेड हे बॉय, डोंट गो फॉर अ फिजिशियन, डोंट गो फॉर MBBS, अदरवाइज यू हैव टू स्टडी मोर एंड मोर, बेटर गो फॉर अ BDS. Start your journey with the dental surgery. It's a premium professional line. You can start your own business. You can treat. You are an individual boss. You don't need to listen to your superior. You are a boss. Oh my God, what an image. You can buy a car, you know. And in USA, people say dentist और वकील ये सबसे रिच आदमी होते हो। रिच 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 ही रिच। हम तो बचपन में रिच ही रिच कार्टून देखते थे, बस वही जानते। प्रोफेशनल लाइन में आने के बाद तो लग पता जाता है। फिर शादी हो जाती है जी, शादी हो गई डेंटिस्ट से। अरे कोई मसला नहीं, अरे हम चीख चीख के कह रहे हैं हमारे पास अभी कुछ नहीं है, हम तो से बने हैं, काम शुरू किया है, आता भी नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, सिर्फ लॉग बुक भरी थी प्रोफेशनल लाइन के अंदर, 100 दांत निकालने थे, 50 रूट कैनाल करनी थी, वो करके हमने प्रोफेशनल एग्ज़ाम का वाइवा दे दिया था, डिस्टिंक्शन ली थी, माना। पर इंटरेस्ट ये नहीं था कि पैसा मिलना है, इंटरेस्ट ये था कि एग्ज़ाम पास कर देना है और अटेंडेंस मार्क करनी है। एम आई राइट? जो भी डेंटिस्ट या फिजिशियन या MBBS बन रहे होंगे उनको तो मेरी बात बहुत अच्छी तरह समझ आ रही होगी। कोई बात गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा, बिकॉज इस मूवी, इस जो भी डॉक्यूमेंट्री है, इसके अंदर किसी किस्म की बनावट, किसी किस्म की एडिटिंग ना है ना मुझे आती है। मुझे दुनिया की हर चीज़ आती है लेकिन एडिटिंग नहीं आती है। आई हेट एडिटिंग। मुझे कैंडिड पिक्चर पसंद है, रियल पिक्चर, रियल लाइफ, रियल कलर, उसके अंदर एडिटिंग करना, आई हेट एडिटिंग। उससे नेचुरल लाइफ ख़त्म हो गई, ब्यूटी ख़त्म हो गई। सो शादी हो गई, शादी होने के जी 7-8 महीने गुजरे और हाँ ये होता है डेंटिस्ट का होता है पैसा ही नहीं है। और भाई हम कह रहे थे पैसे नहीं है, डॉक्टर तो मशहूर है, ओल्ड इज़ गोल्ड, लेट हिम प्ले सम गेम। उसको गेम खेलने तो दो, खेलेगा तो सीखेगा ना, और फिर ही तो कमाएगा। सालों गुजर जाते हैं, पता नहीं चलता, शादी ख़त्म हो जाती है। कहता है माय फुट, ख़त्म हो गई तो ख़त्म हो गई, क्या कर सकते हैं। नाउ रिवेंज लेना है, रिवेंज इससे लेना है, तुमसे अच्छा ला के दिखाना है और उसको खुश भी रखना है। तो करने वाला कौन है? रिश्त तो अल्लाह ताला ने लिख दिया है, मार्क कर दिया है, हमारे रब ने मार्क कर दिया। पर वही बात स्केच है, डेंटिस्ट तो अमीर होते हैं, डेंटिस्ट अमीर नहीं होते, डेंटिस्ट अमीर नहीं होते हैं। डेंटिस्ट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत वर्क हार्ड करना पड़ता है। दे नीड टू वर्क फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। Yeah, exactly. They need to work for years and years. So it is just a false sketch. Please cut off this false sketch. Dentist अमीर नहीं होते, अमीर सब होते हैं। अमीर हर वो इंसान होता है जिसकी नीयत साफ़ होती है, अमीर हर वो इंसान होता है जिसकी सोच अच्छी होती है, अमीर हर वो इंसान होता है जो अपनी चीज़ को गिनता नहीं है। अगर गिनना शुरू कर देगा तो गिनती में जब चीज़ आ जाएगी तो लाजमी है वो ख़त्म होगी। तो प्लीज़ गिनना छोड़ दें। लेकिन डेंटिस्ट तो अमीर होते हैं, डेंटिस्ट तो बहुत पैसा कमाते हैं। हमें मजबूर होकर कहना पड़ता है वाई, क्या मैं दरवाजे के पीछे आपके बैठ कर दांत बना रहा हूँ? इफ़ वी आर यूजिंग सम लेबॉर्ट्री, कैन यू गो टू द लेबॉर्ट्री एंड डायरेक्टली आस्क देम टू फैब्रिकेट योर न्यू टीथ? क्या वो आपके मुंह में नए दांत फिट कर सकते हैं? नहीं कर सकते।
कभी भी नहीं कर सकते. They will definitely ask you that please sir go to the dentist, and dentist से कहें कि वो आपकी दांत की preparation करे, because the dentist is a certified individual profession and he is allowed the permission that he can design, he can use any sort of procedure in your mouth, but we cannot. We have to listen to the dentist. If he allow us, if he use us, he have to pay us. तो जब हम उसको पे करेंगे तो हम आपसे भी चार्ज करेंगे. हम आप ये चाहते हैं कि आपको रिलायबिलिटी क्वालिटी हो, देन लीव एवरी ट्रीटमेंट टू द डेंटिस्ट. प्लीज़ डोंट लीड अस. Don't lead any doctor. I'm not talking individual myself. I don't want you or anybody of you in this world to see my clinic. No, I don't want. Please ask me. You comment me, ask me. If you want to ask me any sort of question, I'll provide you the question. I'll definitely answer you. I'll definitely answer you. Please understand me. But dentists अमीर होते हैं. This is just a false sketch. I've been listening this sketch since I was maybe I was 6 or 7 years old. This profession is very dirty profession, an excellent dirty profession, an elite class dirty profession. High demand, high position. No, we need to work very hard, and we need 100% perfection to provide you satisfaction. हमें आपको सेटिस्फाई करने के लिए 100% सेटिस्फैक्शन देनी है, 100% सेटिस्फैक्शन देनी है. देयर इज़ नो चांस, देयर इज़ नो लैग. अगर लैग हो गया तो आपका दांत गया. So try to understand us. Maybe this video is boring for so many of you people, maybe. But you know, there is no glamour, there is nothing. But you know, I'm a qualified person and I'm a knowledgeable person. I'm telling you everything, each and everything, precisely and without any sort of editing, and this is absolutely true. I'll get back to you soon, but I am just into the journey of dentistry. And I want to lead everybody of you, and I want you to convey your thinking, your insights, whatever is in your mind regarding dentistry or anything, any walk of life. Please contact me. Please message me. I just want you. Believe me, I'm sitting alone. It's Sunday, and I'm talking to you just like that. I'm talking to billions of people sitting in front of my eyes, but there is nobody, not even my wife, my son, my parents. No one is here. But I just want to I just want to clarify the journey. The dentistry is a very hard subject, a very difficult job, a very, very responsive and very difficult job. I'll get back to you soon, and do listen to my video. Each and every sentence and knowledge I just shared with you is unique. There's no edit, there's nothing artificial. Every word is unique, like you are. Every one of you are unique. Everyone is unique. And last thing, I just want to convey a message. Please try to be a good listener with everybody, with me and your family member, with your friend. Be a good listener and do whatever you like, but be a good listener. Definitely you will be strong. You'll be strong, definitely, I'm sure. So thank you so much. Thank you very much. And I don't know, I am working for YouTube since years, maybe. I just want you, if you understand the word subscribe, do subscribe. Push that button. That will help me out. I don't want to earn a lot. I am doing this channel just to provide you information and some benefit, of course, for my son. Maybe this channel will be helpful for my son. Maybe. So please subscribe the channel if you like it. If you don't like it, unsubscribe. Don't like. I don't mind. And let me know if you want to. Take care. Have a nice time. Very soon, inshallah, I'll be in front of you as well. Thank you.